Hello and welcome to the first episode of Open Court with Dr. KK Muhammad. I have with me journalist Muhammad Anas and the guest of our show, Dr. KK Muhammad. Dr. Muhammad needs no introduction. He is a renowned archaeologist. He has worked with ASI as a regional director. He is also the author of the book Main Hoon Bhartiya, and in 2019 he was honored with Padma Shri, the fourth highest civilian honor. जैसा कि मेरी कुलीग आस्था ने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद को किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद जो है अपने फील्ड में एक मिशनरी के तौर पे काम कर रहे हैं और वो अपने काम की वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं और भारत की विरासत को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए उनका अभूतपूर्व योगदान है। Thank you so much, Dr. Muhammad, for joining the show. And before we jump to the questions, let us take a look into India's cultural heritage. My Heritage, My Pride is an idea to discuss, protect, and preserve the legacy and heritage sites of our great nation. India's rich civilization and history have resulted in a plethora of historical monuments. Today, the country's 40 heritage sites have been added to the UNESCO World Heritage Sites, in which 10 sites have been added after 2014. India is the sixth country with the most UNESCO heritage sites in the world. India's 49 sites are on UNESCO's tentative list. India has also been able to bring back many ancient antiques and relics from across the world recently. Since 2014, over 200 idols have been repatriated to India as compared to 13 before. These include statue of goddess Annapurna Devi, a 500-year-old statue of Lord Hanuman, and a 10th century stone idol of goat-headed Yogini. 157 artifacts have returned to India after PM Modi visited the US. 29 centuries-old artifacts were also handed over by Australia to India. The movement for bringing home India's lost heritage has already begun. And yes, the moment or revolution for claiming India's lost heritage has already begun. Diving straight into the subject, Dr. Muhammad, if we can start with the big picture of India's rich cultural heritage and the loot and the losses it has seen. Maybe some numbers and statistics of unprotected sites. Yes, as we all know, that India has a very rich heritage. And the antiquity of this heritage goes back to a time when history itself was very fresh and time stood still. For example, if you go to some of the different parts of the states, for example, if you go to UP, Sarnath, or Ajanta, Ellora, or in southern India, the great Mahabalipuram, Brihadishwara temples. There you have monuments and also sculptures that are divine in conception and sublime in execution. Very rare pieces, beautiful pieces of Indian art and architecture. But unfortunately, because of certain historical vicissitudes, many of them have gone outside the country or smuggled outside the country, and it is in various museums in different parts of the world. For example, if you go to this place, that is the Lower Museum, there you can see a number of pieces, a number of sculptures there. And in British Museum also, British Museum, Victoria Albert Museum, and in all these museums, we can see a number of sculptural pieces, beautiful pieces from India. Most of them have got their own Indian origin. And they are now, because they are now preserved and conserved there in those monuments. And now the ultimate question is whether it should be brought back again to India, and whether we have got whether we have got the legal right to bring them back also. That is another question. So these are some of the questions that are bothering not only India, because this problem many other countries are also facing, and especially Southeast Asian countries, from Thailand, from Sri Lanka, from Burma, and from many other countries. We have the same problem, and also from African countries also. So this is an international question,
And we'll have to go by the UNESCO Charter of 1970. मोहम्मद साहब, अब सवाल ये उठता है कि जो भारतीय विरासत है, जिसे बाहर के लोगों ने लूटा, और उन्होंने तो न सिर्फ लूटा बल्कि उनको उसको नष्ट भी किया, डिस्ट्रॉय भी किया। तो आपकी समझ के हिसाब से ऐसा क्यों हुआ? Uh, uh, because it's a very big question. Of course, in the initial stage, they looted and they took it back to their own country also. But at the same time, I may not fully agree with the question. And they have on their own, because in the initial stage, of course, that was there, that was the order of the day also. You just cannot blame anybody for that. But in the next stage, it is they who had come and, conserved and preserved the rich heritage of the country. They played a very major role because, for example, Sir William Jones, it was he who had started the Asiatic Society of Bengal at that time. And then he did a lot of things for the conservation and preservation and also for the understanding of Indian culture. Because we did not know, perhaps you might be shocked to know that we did not know that Buddha, the great Buddha, was an Indian. Many of the historians of those we read, including Sir William Jones, he thought that he is an African. Because some of the sculptures that was excavated in different parts of the world, he had that, that ringed, this one hair was there. So some of the most of the historians at that time thought he's not an Indian, but he is an African or an Ethiopian. Similarly, about the great Ashoka, most of the historians thought that he was a Sri Lankan, he was not an Indian. Because this epitaph that Ashoka Priyadarshini, this was only, till that time it was known that it was only a Sri Lankan king, not an Indian king. How the whole thing, this misconception about Lord Buddha and Ashoka was removed, that was due to the efforts of these English people. Similarly, it was Alexander Cunningham who had for the first time, it was he who had identified this one, the great Harappa and Harappa. And then it was again Sir John Marshall who could identify that this was the real great Harappa and Mohenjo-daro, and he could push back the date of Indian culture from 6th century BC to 2500 or 600 BC. That was another great contribution. Similarly, about the great Nalanda University. About the Nalanda University also, when Francis Hamilton, when he this one located the site, he did not know it was the great Nalanda University. He mistook it. Oh, this might be the palace of a great king. And then again it was Alexander Cunningham who identified it as the great Nalanda University. Similarly, James Prinsep, it was he who had deciphered many of our writings, and especially the Brahmi literature. So I won't agree with that question that they had completely looted. Of course they had looted, but at the same time they made enormous contributions also for the decipherment of our inscriptions, and also for the preservation of the many of our sculptures. If they had not done at that period of time, perhaps it might have taken 50 or 60 years again to decipher all those things and also to rediscover India. So that is their enormous contribution. But how many artifacts and known artifacts you think are still outside, and they are maybe exhibited in different museums? What would be the number, and what are the the greatest ones that you would Yeah. want to discuss right now? See, because there are many agencies. For example, the India Pride Project. They are doing a wonderful service, because those people, they are now the real conservators and preservators of Indian heritage. They are doing a wonderful work. So, and they have made certain calculations on the basis of which
It is more than 50,000 antiquities are in various museums outside the country, outside India. So it's a wide calculation. It may be wide of the mark also, but still, that gives you a kind of possibly it might have been 50,000 or 60,000 or 70,000. So let us hope, these things are there outside the country. And there are certain rules and regulations also. We have to work within the framework of all those international rules and regulations for bringing them back. Now, even if you bring them back, also there is one more question: whether we would be able to preserve them in distant hamlets of our country. Do we have that kind of support system there in different villages of the country where it actually belongs to? All these questions will come up again. मतलब ये जो विषय है कि हम अपनी विरासत का संरक्षण करें, ये इस समय में है, इसी में इसको उठाना क्यों आवश्यक है? नहीं, ये इसलिए जो ना ये कि अगर हम लोग अभी टेकअप नहीं करेंगे, फिर बाद में जो ना बहुत बड़ा समस्या बन जाएगा ये, क्योंकि अभी तो खैर तो वी हैव गॉट मेनी फैसिलिटीज आर देयर, so and it has become an international problem also, not only in our country, because we are going, with the UNESCO. In UNESCO also it is a very big problem. All of them are taking it all over the country, because there are demand for Kohinoor, as you know, from India also, and from Pakistan also it is there, from Afghanistan also it is there, from Bangladesh also it is there, because at that time it was only one country, but now it has become different countries. So all these problems, if we are not taking up this question, अभी अगर हम लोग take up नहीं करेंगे, बाद में शायद जो ना हम लोगों को मिलेंगे नहीं. तो इसलिए जो ना अभी तो हर तो all over the world this problem is going on, and many of those countries are also taking it up. Sir, how do you think students and youth can be introduced to the idea of my heritage and my pride? How can they Right. be, motivated for showing activism in, in repatriating and reclaiming India's heritage? In reclaiming and repatriating India's heritage, they may not be playing a very active role. They cannot also because of international rules. But at the same time, we can instill pride about our own future. This one, विरासत, हमारा जो विरासत के बारे में, we can instill pride in them. और ये it should be part and parcel of our educational system also. Right. For example, because whenever you go to any of these monuments, you often find that students scribbling their names along with the names of some other people or something. And if you tell them that this is your own heritage, this belongs to the period of Ashoka, this belongs to the period of Chandragupta Maurya, or this belongs to the period of Kushans or the Harsha or Akbar or Shah Jahan, and tell them it is part and parcel of your own heritage, and then give them a way also how to with this one conserve and preserve it, then of course they will be part and parcel of your own activities. For example, what I had done in Nalanda was, in the initial stage, in Nalanda we had the same problem, because students कहीं पर भी जाएंगे तो वो लोग अपना नाम लिख के विकृत करेंगे. तो हम लोगों ने कई स्कूल को जो ना चिट्ठी भेजा, स्कूल्स को बुलाया और उनको मॉन्यूमेंट में जो ना पूरा समझा दिया, पूरा मॉन्यूमेंट्स के बारे में. और समझाने के बाद जो ना फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि आपको यहाँ जो ना एक ओथ लेना है. वो ओथ ये होगा कि हम मॉन्यूमेंट्स में अपना नाम लिख के विकृत नहीं करेंगे. हम अपने मॉन्यूमेंट्स को अपना माता पिता की तरफ जो ना इज्जत से देखेंगे. इसी तरीके के 3-4 सेंटेंस थे, बहुत ज्यादा नहीं था. वो भी जो सारनाथ के जो हमारा जो रोरिंग लायन जो है, जो नेशनल एम्बलम है, उसका एक रिप्लिका बनाया हम लोगों ने. उसके सामने रख के बच्चों ने कसम खाना शुरू कर दिया. तो 1-2 साल के अंदर फिर हम लोगों ने ये भी किया, जितने भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट के थ्रू जो ना सारे स्कूलों को ये इंफॉर्मेशन दे दिया that on 19th of November means World Heritage Week. तो World Heritage Week की शुरुआत है up to from 19th of November up to 25th of November. उसी दिन 10 बजे 19 को नवंबर को 10 बजे सारे स्कूलों में बच्चे खड़े होके ये कसम खाएंगे.
सो उसके पहले हम लोग उनसे बताएंगे, देखिए अब जो नालंदा है ये वो नालंदा है जो लॉर्ड बुद्धा एक जमाने में ने यहाँ आके बैठते थे। एकम समयम भागवा नालंदायम विहारादि पवारिकाम्रवने, एक जमाने में लॉर्ड बुद्धा यहाँ आके बैठते थे। अब आप जो ना जो चल रहे वो उसी सरजमीन पे। उसी तरीके से कहते थे कि जो लॉर्ड दिस वन ह्यूआन 16,000 किलोमीटर पैदल चल के ये जगह देखने के लिए आया था। और देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए भी नहीं, स्टूडेंट बनने के लिए भी जो ना उन्होंने 16,000 किलोमीटर उस जमाने में पैदल चल के आए थे। जब आप ये चीजें बच्चों से बताएंगे, आप उसी सरजमीन पे चल रहे हैं, जब उनसे बताएंगे तो उनको जो देखने का, जो मॉन्यूमेंट को देखने का और ये विरासत को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। क्योंकि यही हम लोगों ने उनको समझाया। उसके बाद जो है बच्चे कसम खाया, सिर्फ बच्चे कसम भी नहीं खाया, फिर उन लोगों ने ये कहा कि ये जितने भी पेड़ पौधा जहाँ उगे हुए हैं ये सब जो ना हम लोग अपने हाथों से क्लीन करेंगे। यहाँ के जितने भी कचरा जमा हुआ है ये सब हम लोगों के हाथों से ही हम जो ना साफ कराएंगे। ये उनके रिएक्शन था, ये हम लोगों ने उनसे कहा नहीं था, हमने सिर्फ उनको ओथ लेने के लिए बुलाया था और उनको दिखा भी दिया था। लेकिन उन लोगों की तरफ से उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोग यहाँ का जो है घास जितने भी है वो सब निकालेंगे। फिर उन लोगों ने कहा हम हर 6 महीने में या हर साल में जो ना हम लोग आते रहेंगे। ऐसे क्या है, जब जो ना अगर जो ना आप जो ना जब नालंदा को अगर साफ सफाई करेंगे, नालंदा जब बना रहा था वी कुड नॉट बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। उस जमाने में हम लोग उसको कोई उसके लिए कोई मदद ले नहीं पाए। लेकिन जब हम लोग अब उसको जो ना रख रखाव के लिए जब मदद कर रहे, यू आर बिकमिंग ए पार्टनर विद अशोका, यू आर बिकमिंग ए पार्टनर विद हर्षवर्धना, यू आर बिकमिंग ए पार्टनर विद द ग्रेट ह्यूआन। तो वो एक तरीके से जो ना ये भावना जो ना बच्चों में आ जाएंगे, फिर वो आपके लिए ये मॉन्यूमेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दिस इज सिंपली ए ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये बदलाव के लिए जो ना हम लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, वो काम हम लोगों ने किया है। एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन, आई मीन यू यूज द स्टूडेंट्स एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। मैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बच्चों को यूज करने के लिए आपको कोई पैसा पेमेंट करने की जरूरत नहीं। उनका चाय का इंतजाम कर दीजिए या कुछ ड्रिंक्स का, उनको जो ना कोल्ड ड्रिंक्स का इंतजाम कर दीजिए, पानी की इंतजाम कर दीजिए, वो बहुत खुशी से करेंगे। लेकिन आपको जो ना ये जो फीलिंग जो ना इंजेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी हैव डन। इसी तरीके से मैं गोवा में देयर वाज एन आर्च ऑफ कंसेप्शन। वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं था इसलिए मैं पैसा खर्च नहीं कर पाता था, लेकिन मैं वहाँ का जो डम्बे कॉलेज था वहाँ के स्टूडेंट्स को बुलाया और उन लोगों ने बिल्कुल अवनकार सेवा का काम किया है। और फिर से वो सारे मॉन्यूमेंट जो है ठीक हो गया। This is beautiful, sir. And I think catching them young is the basic idea. It will वेरी गुड, become a part and parcel of their personality if they बिल्कुल feel बिल्कुल। so strongly about हाँ, monuments and their own यस, heritage. So, आपने because बहुत सही कहा, Virasat, कैच दम यंग वाला आपने बहुत सही कहा। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। अगर उसी टाइम में जो अगर आपने इनके दिमाग में दिमाग में ये डाल दिया है, फिर वो बिल्कुल मिटने की नाम ही नहीं लेंगे, वो बिल्कुल आगे तक जो ना चलेंगे, उनके साथ चलेंगे। जो है मोहम्मद साहब ने बताया कि किस तरह से जो हमारी विरासत है उसका संरक्षण संभव है, और वो भी खास तौर से जो एक नौजवान छात्र हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए या नौजवानों को इन जनरल इन्वॉल्व करते हुए। कम से कम कुछ स्कूलों में जाकर ये बात कही जा सकती है कि भाई आप किसी एक मॉन्यूमेंट को, किसी एक हेरिटेज साइट को अडॉप्ट अडॉप्ट कर कर लीजिए, दीजिए, अपने अडॉप्ट कीजिए, अपने बिल्कुल। अपने बच्चों को भेजिए, वहाँ वो सफाई करें, उसके बारे में जानें, उसको आकर के फिर अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करें। और इस तरह से और भी बहुत सारे काम पॉसिबल हैं। और मोहम्मद जी ने जिस तरह से ढेर सारी चीजें बताई हैं, एक कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी कि अभी तक मेरे जैसे नौजवान को नहीं पता थी कि गौतम बुद्धा का अस्तित्व भारतीय है। ये भी बहुत बाद में लोगों को मालूम है, जब लोगों ने रिसर्च की है, लोगों ने फील्ड में गए हैं, लोगों ने पता किया है कि ये सारे जो स्तूप हैं, जो निशानियां हैं, ये क्या कहती है, उनके पीछे की स्टोरी क्या है, तो तब जाकर मालूम हुआ है। तो आई होप के यूथ जो है इस मैसेज को जो है बिल्कुल कैच करेंगे
और हम मोहम्मद साहब के साथ में आगे इस तरह की चर्चाएं जारी रखेंगे, लोगों को और मालूमात होगी और लोगों को और इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। Thank you so much, Dr. Muhammad, for your time. And to know more on India's archaeological heritage and Indian artifacts, keep watching Open Code with Dr. K.K. Muhammad.